Good morning, students. This is class 12th biology, and we are discussing sexual reproduction in flowering plants. So, as you know, this is the chapter 2nd, and we are doing it in session 22-23. So, I have shared a PowerPoint presentation of this. With the starting of the chapter, it starts with a diagram of flower. And in the present slide, you are able to see a diagram, well-labeled diagram of flower. Flower is a modified shoot. That means stem has a floral meristem which modifies and which creates all the floral whorls. Parts of the flower are arranged in circle called as whorls. सबसे outermost पे जो whorl होता है आप देख सकते हो, it is calyx. It is the whorl of group of sepals. Inner to that is the group of petals which are colorful called as corolla. Inner to that is a group of stamens called as androecium, and the innermost is the group of carpel called as gynoecium. So सेपल्स का ग्रुप, ये जो ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं. दीज आर पार्ट्स ऑफ फ्लावर. पेटल्स के ग्रुप जो कलरफुल होते हैं, उनके ग्रुप को कोरोला कहते हैं. देन स्टेमन्स के ग्रुप को आप एंड्रोशियम कहते हैं. ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो इसको हम एंड्रोशियम कहते हैं. एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो कि ये सेंटर में कार्पल आपको दिख रहा है, सिग्मा स्टाइलर ओवी का, उसको हम गाइनोशियम कहते हैं. सो टिपिकल यही फ्लावर के पार्ट्स आपको लर्न करने हैं. आई होप आपको ये क्लियर होगा, बिकॉज दिस वाज इन द क्लास 11th एज वेल. नाउ कमिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्टेम. बिलोंग इन द स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट, the terminal bilobed structure called the anther. स्टेमन का दो पार्ट्स हैं. जो सबसे टॉप में उसका पार्ट है, that is anther. That is the main head part which is bilobed. You can see this is a microscopic image of the anther. You can see two lobes longitudinally, 1 and 2. So this is anther is a bilobed structure, and it also has a stalk-like filament which attaches it to the thalamus. Flower के thalamus में जहाँ पे बाकी और सारे parts grow हो रहे हैं, वहाँ पर anther को वो flower से जोड़ने का काम करता है filament. तो lower part उसका filament होता है. अब anthers monothecous होते हैं hibiscus में. ये एक एग्जाम्पल है. डायथीकस वो मोस्टली ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट में डायथीकस होते हैं, जैसे ब्रिंजल में. नाउ proximal end of filament that I told you is attached to thalamus or petals of flower, and when it is checking the terminology it's written, that means जब वो पेटल से जुड़ा हुआ होता है तो उसको ऐसे स्टेमन को हम एपीफिलस स्टेमन भी कहते हैं. नंबर और लेंथ स्टेमन की अलग अलग होती हैं. एंजियोस्पर्म एंथर. डाइथीकस एंथर इज bilobe with each lobe having 2 thecas. So you can see anther is having 2 lobes that I told you. Okay, 1 lobe, complete lobe, and second complete lobe is there. And you can see inner to that first lobe there are 2 thecas, light green color structures or compartments. These are both the lobe has 2 thecas. So total there are 4 thecas, and the anther is tetragonal, means at 4 corners there are 4 theca. Theca is the anther wall layers inside which microsporangiums are there. There is a longitudinal groove which lengthwise separate the theca.
एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव यहाँ है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव इस तरफ है। ये एक लोब के दो थीकास को सेपरेट कर रहा है। बीच में आप देख रहे हो राउंड सा स्ट्रक्चर, ये कनेक्टिव स्ट्रक्चर है। ये कनेक्टिव स्ट्रक्चर नीचे जो आ रहा है फिलामेंट, उसी का स्ट्रक्चर है। उसके वस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम यहाँ तक रन करते हैं। तो कनेक्टिव इज देयर इन द सेंटर। सो आई होप आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा। मोर क्लियर व्यू इज गिवन हियर। So there are two thecas in each lobe, one theca. Second theca in this A lobe of the anther, and अगर B lobe की बात करें anther में, तो one theca and the second theca. So both the lobes have two thecas at two corners. Then the other labelings, pollen sac. This will be called as pollen sac when the theca are full of pollen grains. Mature होने पर यहाँ पर pollen grains बन जाएंगे और अब इनको हम pollen sac भी बोल सकते हैं। आप एंथर की जो वॉल्स हैं उनके नेम्स याद रखेंगे। सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली लेयर फाइब्रस लेयर और एंडोथीसियम लेयर भी उसे कहते हैं। मिडल लेयर्स, देन innermost to the light green color की जो दिखा रखी है, that is tapetum, and inner to that there are large number of pollens which are formed from pollen mother cells. So these are the names which you should know. Then NCERT image is shown of the microsporangium structure. There are 4 microsporangium or 4 thecas, 4 pollen sac in one anther. This is the cut section of one anther. And connective tissue is shown here, epidermis, endothecium. These are the parts of the microsporangium. Then in next image you can see this is young anther. This is young anther wall, which is having the layers outermost epidermis, then endothecium, then middle layers, then microspore mother cells, and they are surrounded by the layer of tapetum, which is a nourishing layer, which you can see having rich cytoplasm, having dense nucleus, actually providing nutrition to the sporogenous tissue to form microspores. Dithecous bilobed anther. The anther is four-sided tetragonal structure, 4 microspores, microsporangia located at the corners, 2 in each lobe. Microsporangia develop pollen sac. They extend longitudinally packed with pollen grains. Structure of microsporangium TS. Typical microsporangium appears circular in outline. It is generally surrounded by 4 walls. Layers name is epidermis, endothecium, middle layers, and the tapetum. The outer 3 wall layers perform the function of protecting and helping the dehiscence, means breaking of anther to release pollen. Innermost wall layer is the tapetum layer. It nourishes the developing pollen grains. Cells of the tapetum possesses dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. It divides without cytoplasmic division, that is polyploidy. When anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells, the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. Cells of sporogenous tissue undergoes meiotic divisions. तो ये एक फ्लो चार्ट आपको पढ़ सकते हैं। पोटेंशियल पॉलन मदर सेल्स जो हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, वो मियोसिस के लिए रेडी रहते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देते हैं मियोसिस करने के बाद। 4 सेल्स का ग्रुप बनता है। टेट्राड मीन्स अगर मैं इसी को डिवाइड करूं सर्कल को, तो देयर आर 4 माइक्रोस्पोर्स व्हिच आर फॉर्म्ड and these 4 are formed from one microspore potential mother cell. एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 सेल्स बना देता है और इन्हीं को pollen grain कहते हैं। Cells of sporogenous tissue undergoes meiosis. 4 haploid cells are produced. Anther is mature. Its wall dehydrate and then tetrad separate. The pollen grains are released.
outside. Now, structure of pollen grain. Pollen grain represent the male gametophytes. They are the cells which will be going to germinate and produce male gametes. So such cells are called gametophytes. Size, shape, color, design will be changed or will vary with the species. Fossils can be, because they can be fossilized because of the presence of tough substance on the outermost layer called as sporopollenin. Cryopreservation can be stored in pollen banks at minus 196 degrees Celsius, very cold temperature, and can be used for later on for the crop breeding experiment. Pollen food nutritional value. Performance of athlete can increase, race horses can be increased for the consumption of pollen grain. अगर pollen grain के tablets खाते हैं तो उनकी performance वो और तेज भाग पाते हैं. Afflictions, disadvantage है अस्थमा, bronchitis जैसी बीमारियां हो सकती हैं. Respiratory disorders हो सकते हैं pollen grain से. एग्जाम्पल है पार्थेनियम का प्लांट, उसके pollen grain से अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है. Viability, that means the time period till which the pollen grains can be germinated is called viability. It is very large viability for the Leguminaceae, Rosaceae and other plants, but in paddy and rice, it will be for 30 minutes. Now, this is the structure of pollen grains. You can see the exine is very rough, outermost layer. Then the intine is the smooth, cellulose and pectin की बनी हुई इसकी intine होती है. Pollen grain की walls हैं, outermost exine. Exine कहीं एक दो जगह पर absent होती है, उन्हीं जगह को germ pore कहते हैं. So you can see only intine is present at these places. So these places will be acting as for the places where the pollen tube will germinate. Exine is thick, hard, ornamental, made of sporopollenin, means it has various designs. It's most resistant to organic matter. And the pollen kit is the sticky substance which will be produced around the pollen grains. It will be produced by the tapetum layer. Then there will be sporopollenin, and a cavity will be there in that sporopollenin exine. Then there will be intine. So this will be the wall of the triple layer wall structure. Now development of pollen grain. Cytoplasm pollen grain का surrounded होता है plasma membrane से. Mature pollen grain होता है और उसके अंदर उसकी layers है intine और exine. Development में microspore के वो दो बार सेल्स बनाता है, एक बार माइटोसिस करके दो सेल्स बनाता है. बड़ा वेजिटेटिव सेल्स, ट्यूब सेल्स, बिगर, उसके अंदर फूड रिजर्व ज्यादा होता है एंड इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस होता है. छोटा जनरेटिव सेल होता है, स्पिंडल शेप होता है, देन साइटोप्लाज्म होता है उसमें. स्टिल गाइनोशियम इनरमोस्ट वर्ल है. कार्पल के 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. ओवरी के अंदर बहुत ओव्यूल्स हो सकते हैं. मेगास्पोरेंजियम एक ओव्यूल का या बहुत ओव्यूल का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजियम है, जो एक टिश्यू से कनेक्टेड रहेगा जो कि प्लासेंटा कहलाता है. ओवरी के अंदर ये प्लासेंटा से कनेक्टेड रहते हैं ओव्यूल. नंबर ऑफ ओव्यूल ओवरी में एक हो सकते हैं, जैसे वीट में, राइस में, मैंगो में बहुत सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं, पपाया में, वाटरमेलन में, ऑर्किड्स में. मोनोकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी ओवरीज हो सकती हैं, फ्यूज कंडीशन में हो सकती हैं, एपोकार्पस फ्री कंडीशन में हो सकती हैं. यहाँ पर कुछ ओव्यूल्स के नाम भी दिए हुए हैं. एनाट्रोपस ओव्यूल जो 180 डिग्री एंगल पे होता है एंड इट इज इन्वर्टेड ओव्यूल एंड माइक्रोपाइल हिलम के जस्ट पास होती है, तो इट इज अ एनाट्रोपस ओव्यूल. इट इज द ओव्यूल विच इज अपोजिट टू द हिलम. सो यहाँ पर आपका फ्यूनिकल है, ये आपका हिलम है और माइक्रोपाइल जस्ट इसके पास आ रही है, तो ये ओव्यूल उल्टा हो गया है. तो ये ओव्यूल आपका कहलाएगा एनाट्रोपस ओव्यूल. दिस काइंड ऑफ ओव्यूल इज द diagram is given in NCERT. B, it is given in B. Campylotropous, the ovule is curved more or less at right angle to the funicle and it is seen in the Cruciferaceae family. तो 90% एंजियोस्पर्म में तो यही ओव्यूल होता है एनाट्रोपस, जो कि अपोजिट होता है हिलम के.
और उसकी माइक्रोपाइल जस्ट पास आ रखी होती है इलम के। सो 90% में आपको ये मिलेगा। कैम्पाइलोट्रोपस आपको 2 फैमिलीज के मेंबर्स में मिलेगा, लेग्यूमिनेसी एंड जैसे कि दाल वाले प्लांट्स क्रूसीफेरेसी, जैसे कि आपके कैबेज होती हैं। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल 90 डिग्री पे रहेगा। तो हेमी एनाट्रोपस आप सी में देख सकते हो कि यहाँ से ये इसका डायरेक्शन 90 डिग्री इधर चला गया है, तो इट इज हेमी एनाट्रोपस मीन्स हाफ inverted. Amphitropous ovule as well as embryo sac is curved like horseshoe. Amphitropous में horseshoe की तरह दिख रहा है आपको, ई में आप देख सकते हो, ये इन प्लांट्स में होता है, लेमना, पॉपी, लाइस्मा। देन Sarcinotropous ovule 360 डिग्री एंगल होता है, फ्यूनिकल बिकम्स, इसमें फ्यूनिकल आपका coiled हो जाता है around the ovule. Funicle is coiled around the ovule. It is seen in F, Sarcinotropous ovule. Now, after looking at various ovules diagram, we are looking at the typical anatropous ovule, which is in maximum 90% of the plants. So outermost layers are integuments, and inner to the integument, the vegetative cell, nutritive cell is nucellus. Antipodal cells are there. This is embryo sac is also shown in this ovule. So embryo sac is the female gametophyte. जैसे मेल गेमेटोफाइट आपका पॉलन ग्रेन था, एम्ब्रियो सैक आपका फीमेल गेमेटोफाइट है। इसके अंदर ये एग एपरेटस में एग सेल होता है, 2 अदर सेल्स है सिनर्जिड्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस है फॉर्म्ड बाय द पोलर न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल सेल्स and polar nuclei inside the cell, which is called as central cell. And micropyle is the opening जहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स कवर नहीं कर रहे हैं, ओपन है. So micropyle, tiny opening. Then vascular strand is seen in the ovule, and then funiculus is the stalk. Hilum is the point of attachment. Hilum is not shown here, but hilum is the point of attachment of the funicle to the integuments. कहाँ पर आप ओव्यूल से जुड़ रहा है वो दिया हुआ है यहाँ पर, यही आपके एक एक पॉइंट में समझा रखे हैं, वो लर्न होने चाहिए. देन ये एनसीईआरटी में गिवन है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन राइट इट. You can take a screenshot of this and write them in your copy. Then afterwards, the development of megaspore mother cell is given. MMC diploid. Megaspore mother cell will undergo meiosis and will result in megaspore haploid monosporic development. Only 1 functional megaspore will be remaining, 3 will be degenerating. In functional megaspore form embryo sac. So it will undergo 3 mitotic division. Functional megaspore will undergo 3 mitotic division, and it will arrange like this. 2 nuclei move to opposite poles, 2 mitotic divisions, 4 nuclei at each poles. Wall formation will happen. Chaliazal has 3 antipodal cells, micropyle end has 3 cells making egg apparatus, and in the center 2 polar nuclei will be there. And this is the diagram which is to be learned. It is given in the NCERT. You have to learn this. Then there is the other topics, which are the development, the pollen tube formation, the types of pollination. So these will be covered in the next video. So I like to finish my class here, and please like, subscribe and share this video to everyone who is preparing for the board examination online, studying online for the term 1. So this is because term 1 syllabus. So you will be sharing it for the term 1. And I hope you all have understood it well. So thank you, and stay motivated and learn your stuff of NCERT very well, thoroughly, because NCERT is the book which is going to help you in boards, even in the NEET exam.
Thank you and have a nice day.